आज हम 12th मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, कंटिन्यूटी। सो व्हाट इज मीन बाय कंटिन्यूटी? बाय कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, बाय कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, by continuity of a function fx, we can know by continuity of a function fx, we can know whether there is a gap, we can know whether there is a gap or not in the function y equals to fx. So by continuity of a function, we can know whether there is a gap or not in the graph y equals to x, in the graph y equals to fx. अगर कोई ग्राफ है y equals to fx का, तो इस ग्राफ में कोई गैप है या नहीं, ये हम कंटिन्यूटी के थ्रू पता लगा सकते हैं। Whether we can know whether there is a gap or not in the graph y equals to fx. एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है fx equals to -1 when x is less than 0 and fx equals to 0 when x is equals to 0 and fx equals to 1 when x is greater than 0. ये कोई फंक्शन है y equals to fx. There is a function y equals to fx and fx equals to -1 when x is less than 0 and fx equals to 0 when x is equals to 0 and fx equals to 1 when x is greater than 0. Let us draw the graph of this function. O x y x dash and y. So y equals to -1 when x is less than 0. When x is less than 0, then y equals to -1. This is y equals to -1 when x is less than 0. Y equals to -1 when x is less than 0. And y equals to 0 when x is 0. Y equals to 0 when x is 0. And y equals to 1 when x is greater than 0. Y equals to 1 when x is greater than 0. तो पहली चीज कि इस ग्राफ को y equals to 1 और y equals to -1 को we can't draw this graph without lifting the pen. बिना पेन को उठाए हम इस ग्राफ को ड्रॉ नहीं कर सकते। So if we can't draw the graph, we cannot draw the graph by lifting the pen, it means the function is discontinuous. तो हम ग्राफ को, हम फंक्शन को देख करके और उसके ग्राफ को ड्रॉ करके भी हम बता सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं।
सो अगर हम पेन को बिना लिफ्ट किए ग्राफ को ड्रॉ कर पा रहे हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, और अगर पेन को लिफ्ट करना पड़ रहा है ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, इसका मतलब कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। एंड ऑल्सो हियर देयर इज ए गैप इन द ग्राफ, हियर there is a gap, here there is a gap in the graph, on the left side, here there is a gap on the graph on the left side and right side of the point x equals to 0. x equals to 0 पॉइंट यहां था और y equals to -1 फॉर x इज लेस देन 0। ये पॉइंट का मतलब कि ये ग्राफ जो है ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 0 से थोड़ा आगे से स्टार्ट हो रहा है, और ये 0 से राइट से स्टार्ट हो रहा है, यानी y एक्सिस से राइट से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0, इस पॉइंट से नहीं स्टार्ट हो रहा है। तो x इक्वल्स टू 0 के लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी गैप है। सो इफ देयर इज ए गैप इन द ग्राफ ऑन द लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड, हियर देयर इज ए गैप इन द ग्राफ ऑन द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड of the point x equals to 0. Therefore, the function is, we can write directly that the function is discontinuous. The function is not continuous, means discontinuous. So why the function is discontinuous? Because there is a gap on the left side and right side of the point x equals to 0. And if there is a gap on left side and right side of the point x equals to 0, it means the function is discontinuous. Let us see another example. X equals to 2. Another example, let us see. X equals to 2 fx, y equals to fx. Two for x is not equals to 0. When x is not equals to 0, then y or fx equals to 2 and fx equals to 0 when x equals to 0. अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x इज नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब ये हुआ कि या तो y x या तो 0 से ग्रेटर है या x 0 से लेस है। अब इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें, x y x dash and y dash, so y equals to 2 when x is not equals to 0. Y equals to 2 when x is greater than 0 and y equals to 2 when x is less than 0. Y equals to 2 and x equals to 0. So again there is a gap on the left and right side of the point x equals to 0. Again there is a gap on the left and right. There is a gap in the graph. There is a gap in the graph
on the left and right side of the point x equals to 0. So the function is discontinuous. The function is discontinuous. x equals to 0 यहाँ पे है, और for x is less than 0, for x is not equals to 0 का मतलब हुआ either x is less than 0 और x is greater than 0. So x is less than 0 के लिए ग्राफ यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा, certain on the left of the axis यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और for x is greater than 0 के लिए ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. So there is a gap in the graph on the left side and right side of the point x equals to 0. It means the function is discontinuous, and we can't draw this graph without lifting the pen. We can't draw this graph without lifting the pen. It means the function is discontinuous. Let us see another example. Y equals to fx equals to x if x is greater than 0. Y equals to fx equals to x if x is greater than 0, and fx equals to minus x if x is less than 0, and fx equals to 0 if x is equals to 0. You can also write x is greater than equals to 0, x is less than equals to 0. So let us draw this graph. This is x equals to 0, x-axis, y-axis, x dash, y-axis. So y equals to x. This is the linear graph, linear function. So y equals to x, and it would be started from origin because x is greater than and also equals to 0. So this is the graph, y equals to x, and y equals to minus x, y equals to minus x, and y equals to 0 and x equals to 0. So now we can draw this graph without lifting the pen. We can draw this graph without lifting the pen, and there is no gap on the left and right side of the graph. There is no gap in the graph. There is no gap on the left side and right side of the graph. Therefore, this function is continuous. This function is continuous because there is no gap in the graph on the left and right side of the point x equals to 0. There is no gap in the graph on left and right side, the left and right side of the point x equals to 0. It means the function is continuous. The function is continuous. So if we can draw the graph of a function without lifting the pen, as for example this graph can be drawn without lifting the pen, then the function is continuous. And second thing, if there is no gap in the graph, if there is no gap in the graph on the left and right side of the point x equals to 0,
then again also the function is continuous. But for examination point of view, ये तो हम ग्राफ को देख करके ये बता सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, बट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम इसे कैसे करेंगे ये देखते हैं। सपोज वही एग्जांपल लेते हैं, f(x) इक्वल्स टू x if x is greater than 0, f(x) equals to minus x if x is less than 0, and f(x) equals to 0 if x equals to 0. अब यहाँ पे हाउ टू डू एग्जामिनेशन, अब यहाँ पे हमें तीन चीजें देखनी होती है। एक तो राइट हैंड लिमिट, RHL, RHL means right hand limit. Second thing, LHL, left hand limit. And third, we have to see the value of function. Value of function. अब फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पे देखी जाती है। सपोज वी हैव गिवन द पॉइंट x इक्वल्स टू a, ये पॉइंट हमें दे रखा है। क्या हमें दे रखा है कि देयर इज अ पॉइंट x इक्वल्स टू a and we have to check the continuity of the function at the point x equals to a. तो हमें तीन चीजें देखनी होगी, LHL, RHL, LHL and the value of the function. अब हम RHL किस पे देखेंगे, तो RHL हमेशा ग्रेटर देन पे देखी जाएगी। जो फंक्शन, जैसे यहाँ पे तीन फंक्शन है, एक ग्रेटर देन का है, एक लेस देन का है और एक इक्वल्स टू 0 का है। तो RHL कहाँ पे देखी जाएगी, ग्रेटर देन पे देखी जाएगी। ग्रेटर देन वाली फंक्शन पे RHL देखी जाएगी। LHL ऑलवेज कहाँ देखेंगे, लेस देन वाली फंक्शन पे LHL देखेंगे। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहाँ देखेंगे, 0 पे देखेंगे। 0 पे मीन्स a पे, here x equals to a, at point x equals to a. Value of the function means the value of f of a, the value of f of a. अब RHL देखने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें पुट करना होगा x equals to a plus h. Put x equals to a plus h and taking the limit h tends to 0. h यहाँ पे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है a के राइट साइड में, तो RHL के लिए हमें पुट करना होगा x equals to a plus h and taking limit h tends to 0. RHL के लिए हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0 प्लस मीन्स RHL। LHL के लिए हमें पुट करना होगा x equals to a minus h and taking the limit h tends to 0 minus। 0 minus means हम LHL देख रहे हैं और 0 प्लस मीन्स हम RHL देख रहे हैं। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन के लिए हमें क्या निकालनी होगी, FA फाइंड आउट करनी होगी। और अगर ये तीनों इक्वल है मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस fx इक्वल्स टू value of the function f. Means RHL equals to LHL is equals to the value of the function. अगर ये तीनों इक्वल हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर RHL
और LHL इक्वल है। यदि RHL एंड LHL इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल है लेकिन फंक्शन के इक्वल नहीं है, तभी भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है, तभी भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो सबसे पहले हम RHL फाइंड आउट करेंगे और LHL फाइंड आउट करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ गया, तभी हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और अगर तीनों इक्वल आ जाते हैं तो हम लिख देंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हमें x की वैल्यू क्या दी हुई है, किस पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें यहां से इनइक्वालिटी से दिखेगा, यहाँ पे क्या है, 0 है। मीन्स वी हैव टू फाइंड द कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0। और फॉर फाइंडिंग द RHL हमें देखना है कि RHL किस फंक्शन पे देखें। तो हमें देखिए RHL ग्रेटर देन वाली फंक्शन पे देखनी है, और ग्रेटर देन यानी x इज ग्रेटर देन 0 वाली फंक्शन x है। और RHL के लिए पुट करना है a प्लस h। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट a की प्लेस पे क्या है, 0 है। सो वी विल पुट x इक्वल्स टू 0 प्लस h। कहाँ पुट करेंगे, इस फंक्शन में। और लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की प्लेस पे 0 प्लस h डाल दीजिए। 0 प्लस h इक्वल्स टू h टेंड्स टू 0, दिस इज 0। नाउ LHL देखनी है। यहाँ पे हम RHL नहीं लिख करके 0 प्लस भी लिख सकते हैं। अब LHL x इक्वल्स टू 0 के लिए, तो LHL के लिए हमें लेस देन का फंक्शन देखना है, और लेस देन का फंक्शन माइनस x है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ पे माइनस x की प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, पहले LHL के लिए हमें पुट करना है x इक्वल्स टू 0 माइनस h, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस। इस फंक्शन में x की जगह पे हमें 0 माइनस h पुट कर देना। अब h टेंड्स टू 0 मीन्स व्हेन h बिकम्स 0 देन द फंक्शन कम्स टू बी 0। अब हमें तीसरी चीज, ये दोनों इक्वल आ गया, RHL एंड LHL बोथ आर इक्वल। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ a। f ऑफ a मीन्स f ऑफ 0, क्योंकि a की प्लेस पे हमारे पास पॉइंट 0 है। सो f0 की वैल्यू व्हेन x इक्वल्स टू 0, द वैल्यू ऑफ fx इज 0। सो f0 इज ऑलरेडी गिवन 0। So here LHL, RHL and the value of the function all are equal. So we can write in this way, since RHL equals to LHL is equals to f of 0. Thus the function is continuous. The function is continuous at x equals to 0, because RHL, LHL and the value of the function all are equal. It means the function is continuous at x equals to 0. So this is the way to do such type of questions. Let us see another question. Function is, discuss the continuity of the function. fx is equals to 2 when x is less than 0. fx equals to 2 when x is less than 0, and fx equals to 0. fx equals to 0 when 0 is less than equals to
x is less than 1. fx equals to 0 when 0 is less than equals to x is less than equals to 1, and fx equals to 4x. fx equals to 4x when x is greater than 1, where x is greater than 1. ये फंक्शन हमें गिवन है। क्या गिवन है? fx equals to 2 when x is less than 0, fx equals to 0 when 0 is less than equals to x is less than equals to 1, and fx equals to 4x when x equals to x is greater than 1. And क्वेश्चन में ये कह रहा है find the points of discontinuity. Find the points of discontinuity. किस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें देखना है कि इनइक्वलिटी में हमारे पास क्या पॉइंट्स, हमारे पास इस पूरे इनइक्वलिटी में 2 पॉइंट निकल के आ रहे हैं। एक तो है x इक्वल्स टू 0 और दूसरा पॉइंट है x इक्वल्स टू 1. देयर आर 2 पॉइंट्स इन दिस इनइक्वलिटी 0 एंड 1. इसका मतलब ये हुआ कि हम 2 पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। एक तो x इक्वल्स टू 0 पे चेक करेंगे और दूसरा x इक्वल्स टू 1 पे चेक करेंगे। सो फॉर x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 यानी a की प्लेस पे हमारे पास क्या आया? a की प्लेस पे 0। x इक्वल्स टू 0 के लिए सबसे पहले वी विल फाइंड RHS, राइट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट के लिए हमें क्या देखना होता है? कौन सा फंक्शन? ग्रेटर देन का फंक्शन। तो ग्रेटर देन फंक्शन मींस x इज ग्रेटर देन 0 का फंक्शन देखना है। तो x इज ग्रेटर देन 0 का फंक्शन हमारे पास क्या है? ये है 0 इज लेस देन इक्वल्स टू x। 0 इज लेस देन x का मतलब क्या हुआ कि x इज ग्रेटर देन 0। 0 अगर x से छोटा है इसका मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मींस x जो है 0 से बड़ा है। तो RHS की वैल्यू हमें कहाँ देखनी है? यहाँ पे देखनी है x इज ग्रेटर देन 0 के लिए। और x इज ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। क्या गिवन है? 0। सो RHS की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। अब हमें देखना है LHS। तो LHS के लिए x इज लेस देन 0 पे देखना है। x इज लेस देन 0 क्योंकि LHS के लिए लेस देन पे देखते हैं और ग्रेटर देन a, लेस देन a। तो लेस देन a और a की प्लेस पे 0 है तो x इज लेस देन 0। x इज लेस देन 0 पे हमें दे रखा है LHS की वैल्यू 2 दे रखी है। तो सिंस ये दोनों इक्वल नहीं है मींस RHS इज नॉट इक्वल्स टू LHS। तो हम लिख देंगे कि फंक्शन इज discontinuous. Function is discontinuous at x equals to 0. अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं 1 के लिए। तो फॉर x इक्वल्स टू 1, अब x इक्वल्स टू 1 के लिए RHS किस पे देखेंगे? तो RHS ग्रेटर देन के लिए देखना होता है। RHS ग्रेटर देन a के लिए यानी x इज ग्रेटर देन 1 के लिए RHS यानी 4x है फंक्शन। अब यहाँ पे x है इसलिए हमें पुट करना पड़ेगा पुट x इक्वल्स टू 1 प्लस h। x इक्वल्स टू a प्लस h पुट करना होता है और x की वैल्यू यहाँ पे 1 है यानी a की प्लेस पे 1 है इसलिए हमें पुट करना पड़ेगा 1 प्लस h। इसमें h हमने यही नहीं इसलिए नहीं पुट किया क्योंकि ऑलरेडी देयर वाज कांस्टेंट वैल्यू। h तभी पुट करेंगे जब x का टर्म हो, जैसे यहाँ पे 4x है। तो फॉर x इक्वल्स टू 1 के लिए पुट हम देख रहे हैं RHS।
और हमने पुट कर दिया x इक्वल्स टू 1 प्लस एच और लिमिट लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 फॉर एज इट इज x की प्लेस पे पुट किया 1 प्लस एच। नाउ h टेंड्स टू 0, h को 0 डालिए तो 1 प्लस 0 1, सो द रिजल्ट कम्स टू बी 4। नाउ वी विल फाइंड LHS। तो x इक्वल्स टू 1 के लिए LHS किस पे देखेंगे, तो x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1 पे 0 मीन्स ऑलरेडी the value of LHS is 0. So the value of LHS is 0 and RHS is not equals to LHS. RHS is not equals to LHS means function is again discontinuous. Function is discontinuous at x equals to 1. तो दोनों पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, x इक्वल्स टू 0 पे भी डिसकंटिन्यूअस है। और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है f(x) इक्वल्स टू 1 प्लस x, f(x) इक्वल्स टू 1 plus x when x is less than equals to 3, when x is less than equals to 3 and f(x) equals to 7 minus x when x is greater than 3, and we have to check the continuity at x equals to 3. At x equals to 3 we have to check whether the function is continuous or discontinuous. So at the place of a we have 3. So firstly we will see the RHS, and for RHS the function to be chosen. So we have to see the function where x is greater than 3. For RHS x is greater than a and the a equals to 3. So we will see the RHS at this function 7 minus x, because here x is greater than 3, x is greater than a, and for RHS we have to put x equals to a plus h. So put a x equals to 3 plus h and taking limit h tends to 0, and in this function at the place of x we have to put 3 plus h. So 7 minus 3 plus h and solve this. So limit h tends to 0, 7 minus 3 and minus plus minus h. So this comes to be limit h tends to 0, 4 minus h. We have to put the value of h after solving the expression. Now put h equals to 0, so RHS comes to be 4. Now we will find LHS, and for LHS we have to see the value less than a. The function less than a means x is less than 3. Here x is less than 3. So we will see the LHS on the function 1 plus x. So for LHS put x equals to 3 minus h. For LHS we have to put x equals to a minus h, and at the place of a there is 3, and taking limit h tends to 0, 1 plus, at the place of x we have to put 3 minus h. So limit h tends to 0, 1 plus 3, 4 minus h, and h tends to 0. It comes to be 4. So RHS is equals to LHS. Now we have to find the value of the function.
So at which function we have to check the value? At which function? So we have to see whether there is equals to x equals to a. At x equals to a, we have to see the value of the function. Means here less than equals to 3. Means for the value of function, we will select this function 1 plus x, and directly we will find f of 3. F of a means f of 3, and put the value of x equals to 3. So 1 plus 3, it comes to be 4. It means RHL is equals to LHL is equals to f of 3. All these three are equal. RHL equals to LHL equals to f of 3. It means function is continuous. Function is continuous at x equals to 3. Let us see another question. Fx equals to minus of x square. Fx equals to minus of x square when minus 1 is less than equals to x is less than equals to 0. Fx equals to minus x square when minus 1 is less than equals to x is less than equals to 0. And fx equals to 4x minus 3 when 0 is less than x is less than equals to 1. And fx equals to 5x square minus 4x. 5x square minus 4x when 1 is less than x is less than equals to 2. 5x square minus 4x when 1 is less than x is less than equals to 2. We have to check the continuity. Check the continuity. At x equals to 0 and 1. So we have to check the continuity at two given points, at x equals to 0 and x equals to 1. So firstly, we will check the continuity at x equals to 0. Means at the place of a, we have 0. So firstly, we will find RHL. So at x equals to 0, RHL, on which function? We have to check the RHL. So we have to see where there is a function x is greater than 0. So for x is greater than 0, we have to check the RHL. Here x is less than 0, so we can't check on this function. Here 0 is less than x, it means x is greater than 0. 0 is less than x means x is greater than 0. So at this function, we have to check RHL. And for RHL, we have to put x equals to a plus h means 0 plus h. And taking limit h tends to 0. Limit h tends to 0. We have to put the value of x 0 plus h. 4 into 0 plus h minus 3. 4 into 0 plus h minus 3. So it comes to be 0 plus h. So limit h tends to 0. 4h plus 4h minus 3. And h tends to 0, this term becomes 0 and it comes to be minus 3. So RHL comes to be minus 3.
Now for LHS. For LHS, we will have to put x equals to a minus h, means 0 minus h. And on which function we have to see the LHS? The function less than 0. Which function is less than 0? X is less than 0. This is the function on which we will check LHS. So limit h tends to 0, put at the place of x 0 minus h the whole square, and solve this. H tends to 0. 0 minus h means minus h the whole square plus h the whole square, and this comes to be minus h square, and by putting h tends to 0, the result comes to be 0. So since RHS is not equals to LHS, RHS is not equals to LHS, then directly we can write that function is not continuous. The function is not continuous at x equals to 0, because RHS is not equals to 0, then there is no need to find the value of the function. Now we will check the continuity at x equals to 1. So at the place of a there is 1. So for RHS we have to select the function. So the function in which there is x is greater than 1. X is greater than 1. Here x is less than 1. Here 1 is less than x, means x is greater than 1. So on this function we will check the RHS for x equals to 1. And for checking RHS we will have to put x equals to 1 plus h, and taking limit h tends to 0, at the place of x we have to put 1 plus h. So 5 into 1 plus h the whole square minus 4 into 1 plus h. So we will have to solve this expression, limit h tends to 0, 5. We will have to expand on the formula a plus b the whole square, 1 plus 2. Directly we can't put the limit. If there is expansion, then we have to first expand. 1 plus 2h plus h square. Remove the bracket, minus 4 minus 4h. So limit h tends to 0. Remove the bracket, 5 plus 10h plus 5h square minus 4 minus 4h. Now put h equals to 0. So this becomes 0, this 0, and this becomes 0. 5 minus 4, it comes to be 1. So RHS comes to be 1. Now we will find LHS. And for LHS, we have to put x equals to 1 minus h. And for LHS, we have to see the function where x is less than 1. And x is less than 1. This is the function on which we will check LHS. 4x minus 3. So limit h tends to 0. 4 into 1 minus h minus 3. Limit h tends to 0. 4 minus 4h minus 3. This becomes 0, and 4 minus 3, it comes to be 1. So RHS is equals to LHS. It means we have to find the value of the function. So where we will change the value of the function. For finding the value of the function means x equals to 1. X equals to a. X equals to a. Here x is less than as well as equals to 1. Means at this function we will check the value of function, because x is less than, also x is equals to 1. So on the function equals to 1, we will check the value of the function. Directly we will put fx is
4x minus 3. We will find the value of f1. 4 minus 3. 4 minus 3, that is 1. So RHL is equals to LHL is equals to the value of the function. So we will write RHL equals to LHL is equals to f of 1, means function is continuous. Function is continuous at x equals to 1. The function is continuous at x equals to 1, and at x equals to 0 the function is discontinuous. Let us see another example. Fx equals to x square by a minus 9. Fx equals to x square by a minus 9. X square by a minus 9 when x is less than a. X is less than a. And fx equals to 0 when x equals to 0. And fx equals to a minus aq by x square. A minus aq by x square when x is greater than 0. So we have to x is less than a. This is not 0 but a. Fx equals to x square by a minus 9 when x is less than a. Fx equals to 0 when x is equals to 0, and fx equals to a minus aq by x square when x is greater than a. And we have to check the continuity. Check the continuity at x equals to a. So firstly we will find RHL, and for RHL we will have to put x equals to a plus h. For RHL put a plus h, and function, so for x is greater than a. There is RHL, so x is greater than. On this function we will have to check the RHL. So limit h tends to 0, a minus aq by x square means a plus h the whole square, and limit h tends to 0, a minus aq by, expand this on the formula a plus b the whole square, a square plus 2h plus h square, both the terms becomes 0 when we put h tends to 0. So it gives limit h tends to 0, a minus aq, and it remains a square. So limit h tends to 0, a minus a, which is 0. So RHL comes to be 0. Now for LHL, put x equals to a minus h, and the function at which we will check the RHL is x is less than a, means at this function we will check the RHL. So limit h tends to 0, x square means a minus h the whole square by a minus 9. Limit h tends to 0, expand on the formula a minus b the whole square. Expand on the formula a minus b the whole square. So a square minus 2ah plus h square by a, and minus 9. X square by a. So it comes to be, this is not 9 but this is a. This is a. So these two terms becomes 0, and limit
h tends to 0, remains a square by a and minus a. So it comes to be 0. LHL comes to be 0. Now we have to find the value of the function. Already it is given at x equals to a, the value of the function is 0. At x equals to a, the value of the function means fa equals to 0. So since RHL, LHL and the value of the function is equal, RHL equals to LHL is equals to f of a. Therefore, the function is continuous. The function is continuous at x equals to a. Let us see another example. Fx equals to mod of x plus 3. Fx equals to mod of x plus 3 when x is less than minus 8. X is less than equals to minus 3 and fx equals to minus 2x when minus 3 is less than x is less than 3. Minus 2x when minus 3 is less than x is less than 3 and fx equals to 6x plus 2 when x is greater than equals to 3. So find the continuity. Check the continuity. At x equals to 3. So firstly, we will find RHL, and for RHL, put x equals to 3 plus h, and we find the function where x is greater than 3. So this is x is greater than 3. So RHL would be checked on this function. So limit h tends to 0. At the place of x, we will put 3 plus h. 3 plus h plus 2. Limit h tends to 0. 6 into 3, 18 plus 6h plus 2. This h tends to 0. This term becomes 0 and RHL comes to be 20. Now we will find LHL and put x equals to 3 minus h, and the function for x is less than minus, we have to check the continuity for x equals to 3. X equals to not 3 but x equals to minus 3. Check the continuity for x equals to minus 3. X equals to minus 3. X equals to minus 3. So for x equals to minus 3, RHL, put x equals to minus 3 plus h. Now see the function where x is greater than minus 3. So this is the function where x is greater than minus 3. Because minus 3 less than x, it means x is greater than minus 3. So we will check on this function RHL. So limit h tends to 0, minus 2 and minus 3 plus h. H becomes 0, minus 3 minus 2, it comes to be 6. Now we will find LHL. So
For LHS, put x equals to -3 minus h. And this is the function. X is less than -3. On this function, we will check the RHS. So, limit h tends to 0. Mod of x means mod of -3 minus h and plus 3. Limit h tends to 0. Taking minus h common inside the bracket, 3 plus h plus 3. When the mod will be moved, the minus sign becomes positive. So limit h tends to 0, it comes to be 3 plus h plus 3, and h tends to 0, the result comes to be 6. So RHS is equals to LHS. There must be found the value of the function, and the value of the function is also found at this function, because x is less than and also equal to -3. So for finding the value of the function, we have fx equals to mod of x plus 3, and we will find f of -3. So mod of -3 plus 3, this mod of -3, it becomes plus 3 plus 3, which is 6. So f of -3 equals to 6. So RHS is equals to LHS is equals to f of -3. Therefore, the function is continuous. The function is continuous at x equals to -3.